Hello everyone. I hope I'm live. Come on, guys. Thursdays it is. All sorted. All sorted. Thursdays it is. Or Thursday ko you are here in afternoon. Shows your dedication towards your CAT preparation. Let's start today's session. Agenda is very much clear. Today we are going to discuss. CAT QA slot 3 entire questions, all 22 questions. Welcome Saurabh, welcome Ritik. Let's start today's session. Start karte hai beta. Before we move ahead, like daily, those who are not aware of this, at 7 p.m. mostly on daily basis, we conduct classes for QA relevant for CAT and other management entrance test. Right? Usme we cover all the aspects that are required to be covered. टॉपिक्स कवरेज से लेके रिवीजन स्ट्रैटेजी पीवाईक्यूज एवरीथिंग सर हम भी है यस या बेटा चलो एंड ऑल्सो गाइस इंडिपेंडेंट सेल इज ऑन बिगेस्ट ड्रॉप ऑफ द सीजन वेर इन यू कैन सब्सक्राइब फॉर कैट एंड ओमेट्स सुपर पैक रिमेंबर इनिशियली वी यूज्ड टू हैव MBA Pro and Plus subscription. Now we have CAT and OMITS Super Pack, all the batches of CAT and OMITS combined. So plus concept we have removed. Now if you subscribe, you will get access to all the batches. So CAT and OMITS ka Super Pack, you can subscribe only in 6,999. But you need to apply the code CORE MBA. Get benefited from it. 2-3 दिन के लिए ये offer valid है. The date is not mentioned, but we know that it won't last more than 3 days. Be a part of it for all CAT batches and for all OMIT batches. ZAT is down the line, CMAT, CT, everything. Chalo. Now those who are present and paying attention, एक बार like कर दो session and mention present in the comment box. Till then, we'll start with the first question of slot 2024 slot CAT 2024 slot 3. Okay, let's start with it. I hope since intimation was given, you guys have gone through the questions and try kara hai already, right? If not, if you are watching this as a recording and if not have tried, I would strongly urge pause the video. Give yourself 3-4 minutes. Be resented, sir. Give yourself 3-4 of quality minutes. Think over any question, attempt it, and then come back to watch the solution. Straight away, solution mat dekho because these questions are gem for you. ये जो questions है ना, don't waste these questions. We are expecting like questions, same level of questions in CAT 25 as well, unless and until there is a major change in pattern. So don't waste ये जो छुपा हुआ खजाना है आपके पास. चलो, let's start. So the number of distinct integral solutions x y of the equation mod of x plus y plus mod of x minus y equals 2. Okay, so what do we have? हमारे पास given है mod of x plus y plus mod of x minus y equals 2, right? We know that both of the left part and right part is under mod. So अंदर से कुछ positive निकलेगा, right? चलो, what we will do, we will try to figure out the values of x plus y and the values of x minus y. Okay. चलो, now x plus y can be 2, right? देखो. X plus y can be 2. Okay, if x plus y is 2, x minus y has to be 0 because the sum has to be 2 na. X plus y pe focus karo. What values x plus y can take? No, x plus y will take value 2. I mean, there are other possibilities as well. We started with the maximum possible value of x plus y. Okay, so this would be 0. This could be 1. In that case, x minus y would be 1 and minus 1. Do understand this? If x plus y is 1, x minus y can take two values. 1 भी हो सकता है, minus 1 भी हो सकता है. Ultimately, mod के बाहर आने के बाद it would be plus only. So for x plus y is equal to 1, x minus y can take two values.
if x plus y is 0, right? So x minus y can be 2, can be minus 2. Again, x plus y, for x plus y is 0, x minus y could be 2, could be minus 2. Again, mod के साथ the sum is 2 only. चलो 2 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया. If you take this as minus 1, if you take this as minus 1, x minus y would be 1 and minus 1 again. So x plus y minus 1, you will have two possibilities for x minus y. And if x plus y is 2, this is 0. This is 0. Okay. So how many cases can we make? We can make 1. This is first case, this is second case, this is third case, this is fourth case, this is fifth case, this is sixth case, this is seventh case, and this is eighth case. I have 8 different cases wherein x plus y and x minus y have unique solutions. So हर एक case के लिए you will get a specific x, a specific y. That was not required, that was not asked. The only thing that is asked, the number of distinct integral solutions. So it is 8. In every case you can find out the value of x and value of y. It's very easy. अगर आपको I'll help you with this for 1 or 2 cases. Actually it was not asked, पूछा नहीं था. But what you can do here is कि अगर आपको x निकालना है, add them, divide them by 2. So here x would be 1 and y would be 1. For first case, x and y would be 1 and 1. Okay. For second case, add them by 2. Sorry, add them by 2 and divide it by 2. Add them and divide it by 2. You will get x as 1 and y as 0. So this is a second set of solution. Similarly, for all of these cases, you will get distinct pair of solutions. Bolo yes sir. So correct answer to this question was 8. Sorted? चलो आगे बढ़ जाए guys. Clear है ना? Any doubt? No doubt. All you needed to figure out the number of distinct integral solutions, which is 8. Next question. Now, next question says that the number of distinct real values of x satisfying the equation max of x and 2. Max of x and 2 minus minimum of x and 2 equals mod of x plus 2 minus x minus 2. Right. Again a question from mod. Yeah, what is this max function, minimum function? Suppose if you have to, if it is given max of 5 and 4. So max of 5 and 4 क्या होगा? 5. जो greater है ना दोनों में, that would be the answer. Max of 5 and 4 would be 5. Minimum of 5 and 4 would be 4. So it's very simple. So max of x and 2 would be इनमें जो बड़ा है, but we are not aware of the value of the x. We are not aware of the value of the x. So we have to consider the range of x, and that is what is asked. Number of distinct real solutions of x. So कहीं ना कहीं हमें range of x निकालना है, right? Now when you focus towards the right hand side of the equation, you can see the nodes are plus 2 and minus 2. This becomes 0 at minus 2, this becomes 0 at 2. So the nodes are plus 2 and minus 2. So we have to consider 3 ranges. First, when x is greater than 2, okay, greater than equal to 2, right? Second, you have to consider when x is less than 2, greater than equal to minus 2, okay? And third is when x is less than minus 2.
थर्ड क्या है, व्हेन x इज लेस देन -2. हेलो गौतम, very good. So you have to check for all three cases individually. Now when x is greater than equal to -2, greater than equal to 2, okay, तो क्या होगा बेटा, लेफ्ट हैंड साइड से इधर से 2 आ जाएगा, राइट, दिस वुड बी मैक्स ऑफ, नो नॉट 2, इधर से x आएगा ना, because now x is either greater than or equal to 2, so 2 would be from here. What would be this become? This would be 2 minus, this is minimum of x and 2, this becomes 2 minus 2 equals, sorry, this becomes x ना, max लेना था ना, max of x and 2 क्या हो जाएगा, now x is greater than equal to 2, so x will be taken from here, minimum of x and 2, I know that x is either greater than 2 or equal to 2, तो यहां से 2 आ जाएगा. This is something which is positive, ये positive है, right, so it will come out as it is because x is greater than 2. This is positive, this will come down as it is, right, and this is also positive because x is either equal to 2 or greater than 2, तो वहां से भी आपको मिलेगा as it is, it will come out. Solve this, x minus 2 equals 2x plus 4, or I can say x is sorted. ब्रैकेट ओपन होगा ना, x plus 2 minus x plus 2, this goes, x is 6, so this is one solution of one potential solution. Saurav Ganguly says 2 by 3 6, this is one potential solution, x is equal to 6 for x is greater than equal to 2. Now when x lies between 2 and -2, okay, चलो, max of these two would be, इसको वापस से डिड्यूस करेंगे, मैक्स ऑफ दीज टू वुड बी 2 हियर, ओके, मिनिमम ऑफ दीज टू वुड बी x, क्योंकि x इज स्मॉलर देन 2, राइट, इन दिस केस x इज स्मॉलर देन 2, तो मिनिमम ऑफ x एंड 2 वुड बी -2 क्योंकि x छोटा वाला पार्ट है, ओके, वेरी गुड. नाउ दिस x lies between 2 से -2, so this is always positive, this cannot be negative, so यहां पर ब्रैकेट as it is open होगा, है ना, so that would be x plus 2, but here check this out, this becomes negative now, this becomes negative, x, the range of x is between 2 and -2, एग्जाम्पल के लिए 1 ले लो, अगर x 1 पुट किया, so you have -1 inside, so in that particular range this is negative, so जब ब्रैकेट ओपन होगा, so it will come out with a minus sign, already एक माइनस साइन है, एक माइनस साइन के साथ आएगा, so this would be plus x minus 2, sorted, this would be something like this, and now when you solve this you will get 2 minus x equals x plus 2 plus x minus 2, this gets cancelled, and you have 3x equals to x equals 2 by 3, x equals 2 by 3, this is the second solution of this particular equation, ये second solution है. आपको ये भी figure out करना है, what if x is less than -2, what if x is less than -2, okay, चलो, now this, इसमें if x is less than -2, what would be the max of x and 2? 2 would be the max, sorted. What would be the minimum of x and 2? Because x is less than -2, definitely x is the minimum. Here both of these are negative now, since x is less than -2, ये दोनों negative है, तो both of them will come out with a minus sign in front of them, so that would be minus x plus 2 minus of minus x minus 2, right? Both of them will open with a minus sign in front of them, so this is 2 minus x minus 2 plus x minus 2, right? Now what is this? क्या मिल गया आपको? You get, this is cancelled out, x is equal to 6, x 6 मिला, but we already have x as 6 over here, so this is not unique, this value of x is not
unique. Okay. Also, check this out, guys. This case is invalid. Invalid, not unique. छोड़ दो. This case is invalid. Why? Because our assumption says that x is less than -2. Our assumption says that x is less than -2, and it comes out to be 6. So it contradicts our assumption only. It contradicts our assumption only. X should be anything less than -2. X cannot be equal to 6. So this case is technically invalid. Forget about the uniqueness. This case is technically invalid. Sorted? So this particular equation had two solutions. This particular equation had two solutions. Sorted? Very good. Next, in a group of 250 students, the percentage of girls was at least 44% and at most 60%. Okay. So there were 250 students, जिसमें girls and boys. अच्छा, girls at least कितने थी? There are 250 students. Total there are 250 students. So girls के लिए you have the minimum possible number of girls is 44%. What is 44% of 250? 110. So remaining would be boys. जब girls minimum लिया, girls least is 110. In that case, boys is 140. And when there are maximum number of girls, now girl max is 60%. What is 60% of 250? Sir, 150. Hi, na. In that case, there are 100 boys. In that case, so these are two different cases. This is case 1 and this is case 2. Case 1, wherein we have least number of girls, in that case, number of boys would be maximum. Second case क्या है? Wherein we have maximum possible number of girls, in that case, boys would be minimum. Sorted? Very good. Now, this question gives us a hint of set wala when thought diagram बना के. You remember ना? Only X, Y, some of them play cricket, some of them play football, some of them play both of the games. So it's a easy question, right? But in this case, हमें दोनों cases को consider करना है. Okay, chalo. Now, same data is given. The rest of the students were boys, right? Each student opted for either swimming or running or both. Okay, each student has opted for either swimming or running or both. So there was not a single student which hasn't opted for anything. All of these 250 students in both of these cases, they have opted for something. If 50% of the boys and 80% of the girls opted for swimming, while 70% of the boys and 60% of the girls opted for running, then the minimum and the maximum possible number of students who opted for swimming and running. So they have given you the entire data. This question is not at all difficult. The only thing is कि आपको दो केसेस के लिए करना है. एक केस में आपको मिनिमम मिलेगा, दूसरे केस में आपको मैक्सिमम मिलेगा, राइट? वी हैव टू डू द कैलकुलेशंस 2 times. आ जाओ करते हैं. फर्स्ट वी विल डू इट फॉर केस 1. Case 1. Now when we deal with case 1, I'll have to draw a different set for girls and different set for boys, right? Girls के लिए different set. Let this be the set of girls, and let this be set for boys. Okay, some of girls are into swimming, some of them are into running, some of them are into both. Swimming, running, both. Okay, boys, some of them are into swimming, some of them are into running, and some of them are into both. Okay, now first case says that there are 110 girls, 140 boys. 110 girls, 140 boys. Okay. 50% of the boys, check this out. 50% of the boys are
50% of the boys and 80% of the girls opted for swimming. 50% of the boys opted for swimming. 50% of the boys opted for swimming. So total 70 students, 70 boys opted for swimming, right? 80% of the girls opted for swimming. 80% of what? 80% of 110. So 88 girls opted for swimming in this case. Sorted? 70% of the boys and 60% of the girls opted for running. 70% of the boys opted for running. 70% of the boys opted for running. 70% of 140. What is 70% of 140? 98. 98 boys opted for running. 60% of the girls opted for running. 66. Right? 66 girls opted for running. Okay. We are interested in the students who are in this region common. So कितने common होंगे बेटा? How to figure out? Add them. 110 minus कर दो. 88 plus 66 is how much? 154. 88 plus 66 minus 110. आपको बीच वाली वैल्यू मिल जाएगी. This is 0. Okay. So 88 plus 66 is 154 minus 110. This is 44. Okay. Similarly, 70 plus 98 minus 140. Okay. You get the values. What is this? 9, 7, 6, 168, 28. 28. So 44 plus 28 is how much? 72. Minimum is 72. D cannot be the answer. B cannot be the answer. D and B cannot be the answer, right? So this was my case 1. अब case 2 के लिए ना ऐसा करते हैं कि वापस नहीं ड्रॉ करता हूं. Let me change the color of the pen only. I've changed the color of the pen. Case 2. Case 2. ठीक है. Now case 2 में I have how many girls? 150 girls. How many boys? 100 boys. Okay. Everything written with this baby pink or whatever pink this is. कौन सा color है ये? Represents case 2. We'll do the same set of calculations. This is 80% of the girls. So 80% of this is how much? 120. 66 is 60% of this. So 60% of this is how much? 90. Okay, so common is how much? Common is 60. Right? Here 100 ka 70%, this is 70. And this is no 50%. Na? That's 50%. 70 is 50%. 140 ka 50%. So it is 50 here. And this is how much? 70, na? Yes, 70%. So this is 70 over here. How much is this? 70 plus 50. 120 minus 100, 20. So 60 plus 20, 80. 60 plus 20, 80. Maximum there are 80 students who are into both. Maximum there are 80 students who are into both. Sorted? Sorted है ना? चलो guys, let's move. Next question पे jump करते हैं. For some constant real numbers p, k and a, consider the following system of linear equations in x and y. A necessary condition for the system to have no solution is what? No solution चाहिए. So no solution कब होता है? a1 by a2 equals b1 by b2 should not be equal to c1 by c2. This is the criteria for no solution. डायग्राम से इजी हो गया. वो डायग्राम से ही करना चाहिए बेटा. डायग्राम से ना ये हमेशा इजी होता है. ओके चलो. a1 by a2 equals b1 by b2 not equals to c1 by c2. So a1 by a2 here is p by 3. It should be equal to minus 4 upon k. I mean, we do consider the coefficient along with the sign, right? And it should not be equal to 2 by a. Okay. Chalo. Now, which is the necessary condition? Equal to वाले दो है. इनको verify कर ले क्या? हालांकि you can directly also find out the solution, but इसको verify कर लो.
इक्वल टू होने के लिए इन दोनों को इक्वल होना पड़ेगा, सो पी के इक्वल्स -12, सो पी के +12, कोई मतलब नहीं है, आई मीन दिस इज गोइंग नोवेयर। अच्छा, डी एलिमिनेट हो गया यहां से तो डी एलिमिनेट हो गया ना। अब मेरे हिसाब से Kp + 12 शुड बी इक्वल टू 0, डी इज एलिमिनेटेड। हाँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, वी आर डूइंग क्रॉस मल्टीप्लाइंग, सो दिस गिव्स मी डी इज एलिमिनेटेड। ओके, अगर हम इन दोनों को कंसिडर करेंगे, सो -4a शुड नॉट बी इक्वल टू 2k, -4a should not be equal to 2k, right? If we consider these two, this gives me 2k plus 4a should not be equal to 0, or 2a plus k should not be equal to 0, right? This should hold true. Option A is right. Option A is right. This should hold true. Gives me option D is wrong. But यहां पर मुझे exactly मिल गया ना, 2a plus k should not be equal to 0. Option A is right. बोलो yes sir. Am I clear with this? चलो, अभी देखो, if you want to dig further, हालांकि it is not required, इन दोनों को डील करने पे you get that AP -6 should not be equal to 0. AP -6 should not be equal to 0. And here it is given AP -6 is equal to 0. Hence B was invalid. And C तो बस it was given. Done है ना? Got it? चलो बच्चा, welcome श्रद्धा. Okay. Now we have this question from quadratic. It looks like question of quadratic, but actually it's question of numbers. It looks like question of quadratic. Not quadratic यार, ये तो सर्ट्स का नंबर, सर्ट्स का ही है, right. आ जाओ. We have a plus b root 3 square. Square it. What do I get? A square plus 3b square plus 2ab root 3. This is equal to 52 plus 30 root 3, right? If we compare the terms, I can say that this should be, this should represent 30 root 3. So 2ab, it should be 30 root 3, 2ab root 3, this is 2ab root 3, root 3 से root 3 gets cancelled out, ab is 30, and now we know that a and b are natural numbers. Okay, so what could be the values of a and b that satisfies this equation? फ्रैक्शन नहीं है, नेगेटिव नहीं है, नेचुरल इज ऑलवेज पॉजिटिव, 1 और ग्रेटर देन 1. तो ए बी 15 होगा, राइट? दिस गेट्स कैंसल्ड आउट, सो ए बी इज 15. So what are the possible values of a and b? Sir, a and b could be 1 and 5, 1 and 15, 3 and 5, 5 and 3, 15 and 1, right? A and A into B could be these 4 values. Very good. Also, when you compare the remaining terms, so A square plus 3B square must be equal to 52. A square plus 3B square must be equal to 52, right? Or A और B के you have 4 potential combinations. A and B के लिए you have 4 potential combinations. A square greater than equal to 0, B square greater than equal to 0. मतलब neither A nor B can take value 15. Neither A nor B can take value 15. क्योंकि 15 square is 225, way ahead.
नाउ आपको चेक करना है A and B could be 3 5 5 3. You have to check this, and when you check this, you will find कि B is 3 and A is 5. Satisfies. This is 52, which is equal to 52. So this satisfies. This will not satisfy. So we have A as 5 and B as 3. A as 5 and B as 3. So the sum of A and B would be 8. The sum of A and B would be 8. Bolo yes sir. Sorted. Sum of A and B would be 8. आगे बढ़ते हैं. Let's move to the next question. There is a circular plot of land is divided into two regions by a chord of length 10 root 3 such that chord subtends angle of 120 degree at the center. Let us say this is a circle. This is a circle, okay, and we have a chord in here. We have a chord somewhere over here. A chord है. The length of this chord is 10 root 3. The length of this chord is 10 root 3. Also, let's say this is the center of the circle. ये center of the circle है. The chord subtends the angle 120 degree at the center. The chord subtends the angle. Let this be A, B, center O, and the chord subtends angle of 120 degree. So if it is 120 degree, this would be 30 degrees, and this would be 30 degrees. क्यों? क्योंकि OA and OB are radius of the circle, isosceles, and length of the chord AB is 10 root 3. AB is 10 root 3. Now what is asked? What is asked? This chord divides the entire circle into two regions. This chord divides entire circle into two regions, two segments. Okay, this is minor segment और ऊपर वाला major segment. So you have to find the area of the minor segment or the smaller region. आपको इसका area निकालना था. इसका area निकालना था, which is very easy to figure out. Yes or no? कैसा निकलेगा सर? Area of this sector minus area of this triangle है ना? Area of the sector minus area of the triangle. इधर चलो, let's name a point C over here. तो area of OACB minus area of triangle OAB, right? चलो, very good. अच्छा guys, देखो, what if we radius of the circle के चक्कर में हैं हम लोग अभी, ठीक है? What if we draw a perpendicular from center to this chord? अगर हमने इस सेंटर से chord पे एक perpendicular draw किया, and let's name this as D. Okay, so this will become 5 root 3 and this will become 5 root 3, right? यहाँ पर we can find out the OB by using trigonometric ratios. Okay, कैसे निकालेंगे बेटा? I want to find the hypotenuse. Hypotenuse निकालने के लिए क्या करेंगे? This will behave as base. If I consider angle B, BD will behave as base, and I can write in triangle ODB, cos 30 is equal to क्या है? Cos 30 is equal to BD upon OB, right? Base upon hypotenuse. So BD is given. What is cos 30 in fact? Cos 30 is root 3 by 2. BD is 5 root 3. OB. So root 3 से root 3 cancel out. OB is 10.
दिस रेडियस इज 10, ओके, रेडियस मिल गया तो हमारा काम हो गया, राइट, सेक्टर तो निकल जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर। बट इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो कहीं ना कहीं ओडी मिल जाए तो और मजा आ जाएगा। एंड हाउ वी कैन कैलकुलेट ओडी? ओडी इज स्क्वायर रूट ऑफ ओबी स्क्वायर माइनस बीडी स्क्वायर। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से भी कर सकते थे, और साइन tan 30 लेके भी कर सकते थे, और यू कैन यूज पाइथागोरस थ्योरम। यू नो द वैल्यू ऑफ ओबी, ओबी इज 10, ओके, यू नो द वैल्यू ऑफ बीडी, बीडी भी आपको पता है 5√3। करो 100 माइनस 75, ओडी इज 5, दिस इज 5, ओडी इज 5, सेक्टर, हाँ, ओबी मिल गया, ओडी मिल गया, सॉर्टेड, दिस इज क्लियर। एंड नाउ वी कैन, यू कैन ऑलवेज स्क्रॉल बैक एंड वॉच मैंने क्या लिखा था। आई नीड सम स्पेस, आई एम टेकिंग दिस आउट। नो, एरिया ऑफ सेक्टर ओएसीबी क्या होगा बेटा? पाई आर स्क्वायर विच इज 10 स्क्वायर इंटू थीटा, थीटा वॉज द एंगल बिटवीन एंगल एट द सेंटर, so this is 120, that was 120 pi r square theta by 360 degree, right, minus area of triangle OAB, half into base into height, half into 10√3 into 5, okay, now solve this. This is 100 pi by 3 minus ये गया 5, 25√3, 25√3, अगर 25 कॉमन लिया, what I am left with 4 pi by 3 minus √3. Do we have this in option? Option C. Option C. Welcome Rakesh. Option C was the right answer to this question. हाफ ए बी साइन सी से भी निकल जाएगा, यस, हाफ ए बी साइन सी से भी निकल जाएगा बेटा। आपके पास ये 10 था, ये 10 था, राइट, एंड एंगल 120 था, हाफ ए बी साइन 120, हाफ इंटू 100 इंटू, उससे भी मल्टीपल वेज, मैंने बोला ना वहां मल्टीपल वेज है। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, 4-5 तरीके थे इसको सॉल्व करने के उस पॉइंट के बाद। गॉट इट? चलो आगे बढ़ते हैं, जस्ट अ सेक, ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द मिड पॉइंट्स ऑफ ट्राइंगल साइड्स ए बी बी सी ए सी इन ट्राइंगल ए बी सी आर एम एन पी रेस्पेक्टिवली। चलो ए बी सी ए बी सी, द मिड पॉइंट्स आर एम एन पी। अच्छा मिड पॉइंट है ना एम एन पी, प्रॉब्लम सॉर्टेड। मिड पॉइंट गिवन है एम एन पी, मिड पॉइंट गिवन है। मिड पॉइंट, अगर हम मिड पॉइंट को ज्वाइन करें, गाइस क्या है, यू रिमेंबर द थियल्स थ्योरम, द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड इज हाफ ऑफ इट, हाँ या ना, यही है ना, ऐसा ही कुछ है। सर मिड पॉइंट जैसा लग रहा नहीं है, इसको मिड पॉइंट जैसा लगाएंगे हम लोग। सर मिड पॉइंट जैसा लग रहा नहीं है, मिड पॉइंट जैसा लगाएंगे हम लोग एम। चलो वेलकम स्पिट स्टॉक। क्या है रूल क्या है बेटा? रूल सेज दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ अदर टू साइड्स इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड इज हाफ ऑफ इट। एंड एरिया के बारे में क्या है? एरिया ऑफ दिस इज 1/4 ऑफ द एरिया ऑफ द इंटायर ट्राइंगल, राइट, यही रूल है ना।
All of these are midpoints. All of these are midpoints. So I can say कि अगर इसका एरिया x है तो इसका भी एरिया x, इसका भी एरिया x, इसका भी एरिया x. Yes or no? MNBC उल्टा है क्या? चलो कोई नहीं. हाँ दी एम आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है. MNP. I can say that all of them will be having equal area. Sorted by basic proportionality theorem. Right? यहां तक sorted है. The area of ABC is given to be 1440. So all of them will have area 1440 by 4. And what is that? 360. So area here is 360. This is 360. This is 360. This is 360. And this is 360. This is 360. Bolo yes sir. The medians drawn from ABC intersect the line segment MP, MN and NP at XY. Okay, चलो. We will keep these values in mind. अभी के लिए निकाल देते हैं, ठीक है? Why? Because we have to draw the medians. हमें क्या draw करना है? Medians. Okay, medians. And now since we have drawn the medians, one thing to keep in mind is that this is also midpoint. This AN intersects MP at X. This is X. तो कहीं ना कहीं MX is equal to XP. क्यों? क्योंकि सर ये पैरेलल है and this is half. This should be half. Okay? तो MX और XP, X is the midpoint. बोलो yes sir. X is the midpoint. X is the midpoint, right? तो X is the midpoint. So we know now that X here is the midpoint, right? Similarly, MN पे Y. This Y will also be midpoint. And here it is Z. This is also midpoint, right? Or again, if we connect the midpoints, Thales theorem यहाँ वापस लग जाएगा. In this triangle, Thales theorem वापस लग जाएगा. बोलो yes sir. बोलो yes sir. If area of this is A, this would be A, this would be A, and this would be A. So this is 4A. Okay, and 4A is equal to 360. 4A is equal to 360, so A is equal to 90. A is equal to 90, so area of XYZ is 90 degrees. Right? बड़ा खतरनाक फिगर बन रहा सर. नहीं, इजी है यार. I mean, आपको दिखाने के लिए बनाना पड़ा, बट इट्स वेरी इजी टेक्निकली. सो थेल्स थ्योरम का वेरी बेसिक एप्लीकेशन वाज हियर. ओके, सिया देखो बेटा, देखो, देयर इज थेल्स थ्योरम व्हिच सेज दैट अगर आप मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हो ना, ट्राइंगल ABC मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हो, लेट्स से D एंड E, तो DE इज पैरेलल टू BC होता है एंड DE इज हाफ ऑफ BC होता है, राइट? और these two triangles are similar. Also, triangle ADE is similar to triangle ABC. तो इनके sides are in the same ratio, और इनके triangle are in the ratio 1:4. Area is in the ratio 1:4. So area of triangle ADE would be equal to 1/4 times area of triangle ABC. ये सिमिलैरिटी में आपने सीखा है. ओके, सिमिलरली अगर पूरे ट्राइंगल का एरिया मैंने 4x बोल दिया, तो दिस एरिया इज x. सेम तरीके से
दिस वुड बी ऑल्सो एक्स, सेम तरीके से दिस इज ऑल्सो एक्स. So a triangle is divided into 4 equal areas if you connect the midpoints. सर इसका आंसर काफी जल्दी आ गया था मेरा, तो लगा गलत आ गया होगा, इसलिए कमेंट नहीं करा. So if you join the midpoints, technically the triangle is divided into 4 smaller areas, or 4 smaller equal area having equal areas. Okay. तो ये पहली बार लगाना था. Same happened with the larger triangle and the smaller triangle. Smaller triangle में भी आप midpoint अगर connect करोगे तो the smaller triangle will be divided into 4 equal areas. तो सबसे पहले this larger triangle का area was 1440. उसकी वजह से all of them were 360, 360, 360, 360. This was also 360, and now this was further divided into 4 equal areas. This was further divided into 4 equal areas. So 360 further divided into 4 gave me 90. Thales theorem beta. Similarity. Sorted? Clear है? चलो. Let's move to the next question. 10 to the power 38 when divided by 13. 10 to the power 68 divided by 13. The remainder you need to find out. 10 to the power 68. 13. बहुत सारे तरीके हैं इसको सॉल्व करने के. With help of any theorem, without help of any theorem. अगर इसको हम लोग फॉर्मेट से करने जाएंगे तो हो जाएगा इजिली. फॉर्मेट देखो, फॉर्मेट यूज करते हैं क्योंकि दे आर एक्सपेक्टिंग यू टू यूज फॉर्मेट थ्योरम. ओके, फॉर्मेट थ्योरम क्या है? द डिनोमिनेटर शुड बी प्राइम. तो 13 इज प्राइम. 13 इज प्राइम. ऑल्सो 10 and 13 they are co-prime. 10 and 13 numerator and denominator are co-prime. If both of these criteria are satisfying, we can apply Fermat theorem over here. And Fermat theorem के लिए आपको Fermat number चाहिए. What is Fermat number? Is p minus 1. P is 13 here. तो 12 is your Fermat number. 12 is your Fermat number. And now what you could do is कि न्यूमरेटर को ना फॉर्मेट नंबर से डिवाइड करो. मतलब बेस न्यूमरेटर के पावर को, बेस को एज इट इज लेना है 10. न्यूमरेटर के पावर को फॉर्मेट से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर बचेगा वो ले लो. 10 raised to the power 8 डिवाइडेड बाय 13. इसका रिमाइंडर निकालना है. अब अगेन इसका रिमाइंडर निकालना है. ओके, सो इसको आई कैन राइट एज, क्या लिख देंगे इसको? ओके गाइस देखो, 10 by 13, अगर 10 को 13 से डिवाइड किया तो व्हाट इज द रिमाइंडर दैट यू आर गेटिंग? 10 को 13 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या मिलेगा सर? 10 मिलेगा या -3 मिलेगा? ओके, तो हम क्या करेंगे? -3 ले लेंगे. -3 to the power 8 upon 13. Now this can be written as -3 cube into -3 cube into 3 square upon 13. -3 cube is -27 into -27 into 9 divided by 13. इंडिविजुअल रिमाइंडर्स निकालो. यहां पे आएगा 1 या फिर -1, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो. -1 एंड देन 9. ओके, तो दिस इज 1 एंड 9. इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो. You'll get 9 as the answer. हाँ, I mean there are again multiple ways to solve this. बहुत सारे तरीके सॉल्व करने के. Clear? Yes, Gautam, 9 is the right answer. चलो, shall we jump to next question? If you are not part of my official Telegram channel, do join it, guys.
I constantly post link of free classes, free resources, and we do discuss actively on this Telegram channel and group. Chalo, next question. Sam can complete a work in 20 days when working alone. Sam किसी काम को 20 days में कर सकता है. And Mohit is twice as fast as Sam and thrice as fast as Aina in the same job. Let's assume some work. Let's assume some work. Let's take the work here to be 300 units. 300 units. Okay. Now Sam can complete this work in 20 days. So what is efficiency of Sam? Sir, 300 by 20, 15 units a day. Okay. TDS, क्या है TDS? Time, speed and distance. This is not time, speed and distance. This is time and work. And now it is given that Mohit is twice as fast as Sam. So efficiency of Mohit क्या होगी बेटा? 30 units per day. Sam का double. Okay. And Mohit is thrice as fast as Aina. तो efficiency of Aina क्या होगा? Mohit is 3 times fast of Aina. तो Aina is 3 times slow than Mohit. Aina की efficiency would be 10 units per day. Right? Aina की efficiency would be 10 units per day. They undertake a job with an arrangement where Sam and Mohit work together on the first day. First day, who is working? Sam and Mohit. So this is the efficiencies we have got. On first day, we have Sam and Mohit working. Okay. Sam and Aina on the second day. Sam and Aina on the second day. Mohit and Aina on the third day. Mohit and Aina on the third day. And this 3-day pattern is repeated till the work gets completed. Then the fraction of total work done by Sam. Okay. Gautam Rathod says 3 by 10. Ganguly says 3 by 10. Change its answer. अच्छा, अब देखो. So, इस pattern में for 3 days they are working. The different combination is working. First day Sam और मोहित काम करते हैं. तो Sam और मोहित first day में कितना काम कर देंगे बेटा? 45 units of work. Second day में Sam and Aina, they will do 25 units of work. And third day, Mohit and Aina, 30 and 10, 40 units of work. So after completion of one cycle, which is of 3 days, how many work is done? Sir, 110 units of work is done. 110 units of work is done. एक cycle में, right? One cycle, 110 units. So out of 300 units, 110 units of work is done. 190 units of work is left. एक और cycle जाएगा. So now 80 units of work will be left. हाँ या ना? After 2 cycles, 80 units of work will be left. अब देखो, guys, एक cycle में 110 units work होता है. So we won't need the entire cycle for this. 80 units करने के लिए पूरा cycle तो नहीं लगेगा. 80 units work करने के लिए ये पूरा cycle तो नहीं लगेगा. पहले दिन, अच्छा, अब सब पूरा cycle नहीं लगेगा. तो let's go day wise. First day, Sam and Mohit will come and they will complete 45 units. First day, Sam and Mohit will come and they will be completing 45 units. 35 units is left. Second day, Sam and Aina will come and they will finish 25 units. 10 units is left और वो 10 units मोहित और आयना finish कर देंगे तीसरे दिन में. So the work will be completed on 9th day.
the work gets completed, work gets completed, work gets completed on 9th day, right? What was asked here? The fraction of total work done by Sam. अब अगर सैम की बात करें तो हाउ मेनी डेज सैम हैज वर्कड, सैम ने कितने दिन काम करा है? सर सैम ने ना टोटल 6 दिन काम करा है, राइट? सो शुरू के 2 साइकिल में सैम हैज वर्क 2 days ईच, सैम इज वर्किंग ऑन day 1 and day 2, सो 2 कंप्लीट साइकिल्स 4 days, एंड थर्ड साइकिल में भी सैम हैज वर्कड ऑन फर्स्ट 2 days, तो इन ऑल सैम हैज वर्कड फॉर 6 days. Sorted? Sam has worked for 6 days, and per day Sam can do 15 units of work. Each day Sam can do 15 units of work. So work done by Sam in 6 days is how much? एक दिन में Sam can complete 15 units of work. In 6 days Sam will do 90 units of work. So what part of the total work? 90 upon 300. 90 upon 300. Bolo yes sir. So correct answer is 90 upon 300, which is 3 by 10. So Sam has completed 3 by 10th of the work. Sorted? पक्का ना? चलो आगे बढ़ जाते हैं गाइस. Next question. After 2 successive increments, Gopal's salary became 187.5% of its initial salary. So, if Gopal's initial salary was 100, it became 187.5. So, there is an increment of 87.5%. Okay, there is an increment of 87.5%. If the percentage of salary increased in the second increment was twice to that of first increment, परसेंट इंक्रीमेंट निकालना है फर्स्ट वाला. अगर फर्स्ट इंक्रीमेंट में इट वेंट अप बाय x%, सेकेंड इंक्रीमेंट में इट विल गो अप बाय 2x%, एसपीसी लग जाएगा, बट इट्स बेटर फॉर दिस क्वेश्चन एसपीसी लगेगा, क्वाड्रेटिक बनेगा, सॉल्व करो, टाइम लगेगा, बट सॉल्वेबल है. द बेस्ट वे हियर इज गो बाय ऑप्शंस. Go by options. Okay. If 20 is the answer, let's check for 20. अगर 20 आंसर है, अगर 20 आंसर है, तो फर्स्ट इंक्रीमेंट वुड बी 20, सेकेंड इंक्रीमेंट वुड बी 40, so total increment would be 68. A plus B plus AB by 100. Which is not the case here because I know that the increment is 87.5%. Okay, चलो. Now let's check for 25. 25 के लिए check करने पे the first increment is 25, second increment is 50. So successive percentage change gives 25 into 50 by 100 and this is 87.5. So this is my answer. This satisfies the criteria. Option C is the right answer. Option C is the right answer. चलो आगे बढ़ते हैं. हाँ, A plus B plus AB by 100, right? Successive percentage change. Come on, guys. A certain amount of water was poured into a 300-liter container and the remaining portion of the container was filled with milk. Okay. Then an amount of this solution was taken off from the container, which was twice the volume of water that was earlier poured into it. And water was poured to fill it again. The resulting solution contains 72% of milk. Okay, guys, check this out.
So this question is of removal and replacement. They tried to play with the language, but still the language is very simple. Still the language is very simple. पहले x, let's say, let's forget this. Let's forget this. 300 लीटर है या क्या है? Let's forget this. Let's say 100% milk था. Let's say 100% milk था, and first case says that कि some amount of water was poured and remaining was filled with milk. Let's say x percent. Let's say x percent. Okay, x percent was poured and remaining was milk. In first round, x percent was poured, x percent was water, and remaining was milk. Okay, chalo. And in second round, 2x percent, double है ना, 2x percent. Okay, first round में x percent was removed, second round में 2x percent is removed. So let's apply the removal and replacement formula on milk. Okay, milk left is equal to milk original 1 minus x upon 100, 1 minus 2x upon 100. बोलो yes sir. Milk left is nothing but milk started with milk initially, let's say milk initially 1 minus x upon 100, 1 minus 2x upon 100. Sorted. Chalo. And how much milk is left? 72% milk is left. We started with 100%. 1 minus x upon 100, 1 minus 2x upon 100. इसको solve करते हैं. So this would be 100 minus x upon 100. 100 minus 2x upon 100. This 100 and 100 is cancelled out. So what do I have? I have 7200. 7200 equals 10,000 minus 200x minus 100x plus 2x square. Bolo yes sir. We are solving for x now. We are solving for x. क्या मिलेगा बेटा? सर 2x square minus 300x, 2x square minus 300x राइट साइड लेकर चले गए तो minus 2800 is equal to 0. x square minus 150x minus 1400 equals 0. Okay, so this gives me x square minus 140x plus 10x, sorry, minus 140x minus 10x minus 1400 equals 0. अच्छा, this is plus 2800 ना, 7200 जाएगा तो it would be plus only, plus 2800 plus. Okay, solve for it. X minus 140 minus 10, x minus 10, x minus 140 equals 0. So x is 140 or 10 percent, right? X was percent. X percent we started with. We started with x percent. Now amount of water taken out cannot be 140%. Okay, amount of the milk taken out cannot be 140% क्योंकि the maximum is 100%. So x की value would be 10%. This value will be eliminated. X is 10%. मतलब initially 10% was taken out. Second round में 20% was taken out. 10% of what? 10% of this 300. 10% of what? 10% of that 300. So 10% of 300 is 30. 10% of 300, that is 30. Okay, sorted. All of these values were in terms of percentage, and x we assume to be the percentage removed initially. So 2x would be the percentage removed in the second round.
Clear everyone? Very good. चलो, let's move ahead. Gautam, Ritik, Saurav, Sia. Let's move to the next question. Let's jump to the next question. Aman invests rupees 4,000 in a bank. 4,000 in a bank at a certain rate of interest compounded annually. If the ratio of the value of the investment after 3 years to the value of the investment after 5 years is 25:36. 25:36. 3 years. अच्छा देखो, अमाउंट एट 5 years कैसे निकल सकता है? आई कैन राइट अमाउंट at the end of 5 years is equal to amount at the end of 3 years 1 plus r by 100 square, right? 5 साल के बाद जो अमाउंट होगा, कंपाउंडिंग का केस है, राइट? कंपाउंडिंग का केस है. सो अमाउंट एट द एंड ऑफ 5th year is equal to amount at the end of 3rd year, ब्रैकेट में 1 plus r by 100 square. Okay, amount at the end of 5 years is 36 and this is 25. I mean 36 and 25. इसको ऐसे लिख दो यार, चलो. A5 upon A3 equals 1 plus r by 100 square, and this is A5 by A3 is given to be 25 upon 36. That is A3 upon A5. This is A3 upon A5. A3 upon A5 is given. Is given 25 by 36. So A5 upon A3 would be उल्टा हो जाएगा. So that would be 36 upon 25, which is 6 by 5 whole square, which is 1 plus 1 by 5, which is 1 plus 1 by 5 whole square equals 1 plus r by 100 whole square. 1 plus r by 100 whole square. So this r by 100 is equal to 1 by 5. R is equal to 20. Rate comes out to be 20. Rate comes out to be 20%. From here, rate comes out to be 20%. Bolo yes sir. And now what question says, कि with this rate, with the rate of 20%, 4,000 को 20,000 होने में मिनिमम कितना टाइम लगेगा? मिनिमम नंबर ऑफ इयर्स रिक्वायर्ड. सो नाउ आई कैन राइट 4,000 मल्टीप्लाइड बाय 1.2 रेज टू द पावर n इक्वल्स 20,000 चाहिए. आई मीन 20,000 और ग्रेटर देन 20,000, ग्रेटर देन 20,000 चाहिए. So now the best thing that you can do, the best thing you can do, आपको n की वैल्यू निकालनी है. Don't take your ego and use calculator. Okay, आप सिंपली 4,000 को 1.2 से मल्टीप्लाई करना शुरू करो और देखो कितनी बार मल्टीप्लाई करने पे दिस इज मोर देन 20,000. आई मीन कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1.2 को. सो यू विल फाइंड आउट कि आपको 9 टाइम्स 1/2 से 1.2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. यू विल फाइंड दैट आपको 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4,000 को 1.2 से in order to be greater than 20,000. So इसका आंसर was 9. The correct answer was 9. Okay. Sorted? चलो डन. आगे बढ़ जाते हैं. Now we have this. Consider the sequence T1 is equal to 1, T2 is equal to -1, Tn is equal to, so I have T1 as 1,
T2 as -1 and Tn given है, Tn is n-3 into n-1, n-3 upon n-1 multiplied by T of n-2. Okay, chalo. Now we have to find sum of these. So मेरे पास T2 है, I have T2, मेरे पास T2 है तो 1 by T2 भी है. T4, can we calculate T4? T4 निकालते हैं. So T4 निकालने के लिए I can take help of this standard equation, generalized nth term का जो फॉर्मूला है, I can use this. So n की जगह 4 पुट करो. I am looking for T4, तो n की जगह I need to put 4, तो यहां भी n की जगह 4 आएगा. So what I'll get 4 minus 3 upon 4, upon 4 minus 1, T of 4 minus 2, मतलब T2. So this is 1 upon 5 into T2, and T2 is -1. So this is -1 upon 5. है ना? So T4 is -1 upon 5. तो 1 by T4 would be -5. और ये मेरा ऑलरेडी है क्या? T2 है -1. अच्छा सॉरी सर, 4 minus 1 3 होता है ना, क्या कर रहे हो सर? सो दिस इज -3, दिस इज -3. ओके, चलो. नाउ T6, लेट्स ट्राई एंड फाइंड आउट T6. तो T6 के लिए व्हाट वी कैन डू, T6 इज अगेन यूज दिस 6 minus 3 3, 6 minus 1 5, and T4. This is 6 minus 2, T4. So what is T4? T4 I have as -1 by 3. -1 by 3. 3 से 3 cancel out. T6 is -1 by 5. T6 is -1 by 5. T6 is -1 by 5. तो 1 by T6 would be -5. तो एक पैटर्न मिल रहा है आपको, राइट? आपको कहीं ना कहीं एक पैटर्न मिल रहा है. चाहो तो एक T7 भी निकाल लो, T8 निकाल लो इफ यू विश टू, बट यू विल गेट द पैटर्न. नेक्स्ट क्या होना चाहिए? -7. सिमिलरली व्हाट वुड बी दिस टर्म? दिस शुड बी -2021 2023. T2 है तो -1, T4 है तो -3, T6 है तो -5, तो T 2024 है तो -2023. Okay, right, that is T8. You have this pattern. So what we have now, we simply have sum of an AP. We literally have sum of an AP. है ना? These terms written together here, अगर माइनस कॉमन लिया, so this is 1 plus 3 plus 5 all the way till 2023, all the way till 2023. बोलो yes sir. Okay, how many terms this has? How many terms this has? कितने टर्म्स है सर? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2, क्योंकि ये 1 से स्टार्ट हो रहा है ना. सो नंबर ऑफ टर्म्स इज 1 plus 2023 by 2. दिस इज 1012. दिस इज नॉट ऑलवेज एप्लीकेबल. ये यहां पर एप्लीकेबल है क्योंकि इट स्टार्ट्स विथ 1. ओके, एंड व्हाट इज मीन ऑफ दिस? व्हाट इज एवरेज ऑफ दिस? व्हाट इज एवरेज ऑफ एनी एपी? द मिडिल मोस्ट टर्म, अगेन फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2. फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2, which again is 1012. So इस वाले AP का नंबर ऑफ टर्म्स इज ऑल्सो 1.1012, एवरेज इज ऑल्सो 1012. ओके, तो सम क्या होगा बेटा? सम ऑफ दिस AP इज एवरेज इंटू नंबर ऑफ टर्म्स. सम इज नथिंग बट माइनस पहले से है, एंड इसका सम इज 1012 इंटू 1012,
Average into number of terms, right? So answer is minus 1012 whole square. लास्ट में 4 केवल इसके हैं. Option C has unit digit as 4. That should be your answer. Although you can take the help of calculator to find the square of 1012. बोलो हाँ जी. Works. चलो, let's jump to next question. Done? Very good. Now, Gopi marks a price on a product in order to make 20% profit. I believe this is the easiest of all the questions asked in CAT 2024. All the slots combined. Okay. So, the cost price is 100. X. Gopi wants to make 20% profit. So, the marked price was 120x, right? Ravi gets a discount of 10% on this marked price. So, the selling price was 108x. Hi, Anna, 15% discount. 15% discount. So, selling price was 108x and saves rupees 15. So, during the process, Ravi saved rupees 15. And in terms of X, the savings of Ravi is 12x. Savings of Ravi is 12x, right? 120x minus 108x. 15% का discount मिला. He saved 12x and this is equal to 15. So, X is equal to 5 by 4. Hi, Anna. X is equal to 5 by 4. Now, the profit in rupees made by Gopi by selling the product to Ravi. So, Gopi, the cost price was 100x, sold it to Ravi at 108x, earned 8x. Earned 8x. Right? 8x earn किया. So, आपको ये बताना है the profit of Gopi in terms of rupees. I have the value of X. X is 5 by 4. 8 into 5 by 4 is 10. So, Gopi earned rupees 10 in the transaction. Gopi earned rupees 10 in the transaction. Sorted? Chalo bachcha. Next question. The number of all positive integers up to 500 with non-repeating digits. With non-repeating digits. So, the number of all positive integers 1 से लेके 500 तक. 1 से लेके 500 तक. Okay. All numbers with non-repeating digits. So, technically हम लोग 1 से लेके 499 तक देखेंगे. Works ना, क्योंकि 500 starts with 5 and that is the only number in this group which starts with 5 and we are going to eliminate 500 because 500 में you have 2 zeros. I don't want repeating digits. तो 500 तो ऐसे भी आंसर में नहीं आने वाला है. तो let's eliminate 500. We will count the numbers satisfying the criteria from 1 से लेके 499. Okay? चलो. We know that it would be a single digit number. या तो single digit number होगा या तो फिर डबल डिजिट नंबर होगा या तो फिर ट्रिपल डिजिट नंबर होगा. राइट? We know that either it would be a 1 digit number or it would be a 2 digit number or it would be a 3 digit number. अगर 1 digit number है तो how many options do we have? 9 options. 1 से लेके 9 तक anything could be the option. 1 से लेके 9 तक anything could be the option. Right? चलो, if it is a 2 digit number आगे 0 नहीं होगा तो first one के लिए you have 9 options. Second one के लिए also you have 9 options. क्यों?
क्योंकि सेकेंड वाले केस में जीरो विल बी कंसिडर्ड। फर्स्ट प्लेस पे यू कैनॉट पुट जीरो और एल्स इट विल बिकम अ सिंगल डिजिट नंबर। ओके, तो सेकेंड वाले केस पे फर्स्ट प्लेस पे यू हैव 9 ऑप्शंस। सेकेंड प्लेस के लिए जीरो ऑप्शन में है, बट एक नंबर जो यहां पुट हो चुका है दैट इज नॉट एन ऑप्शन। सो 9 into 9, 81 केसेस हियर, 81 केसेस हियर। बोलो यस सर। नहीं, अभी देखो थर्ड केस में हियर 1 2 3 4 देयर आर 4 ऑप्शंस। ओके, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। वी कैनॉट कंसिडर जीरो। सॉर्टेड। सेकेंड प्लेस के लिए आई हैव 9 ऑप्शंस। ओके, जो फर्स्ट पे आया है बस वो नहीं काउंट होगा, जीरो वुड बी काउंटेड। एंड थर्ड प्लेस के लिए यू हैव 8 ऑप्शंस। जो फर्स्ट एंड सेकेंड पे आया है दैट विल नॉट बी काउंटेड, 8 ऑप्शंस। ओके, सो टोटल नंबर ऑफ ऑप्शंस हियर इज 288. 288. Check this out, guys. If you have any confusion, feel free to ask. If it is a single digit number, 1 to 9, 9 options are there. If it is a double digit number, tens place पे you cannot put 0. So बाकी के 9 digits are option. But इस वाले place के लिए जो यहां पर आया है आपको रिपीट नहीं करना है ना, यू डोंट वांट इट टू बी रिपीटेड, सो जो नंबर यहां जो डिजिट फर्स्ट प्लेस पे आ गया है इज नॉट ऑप्शन ऑन सेकंड। ओके, तो सेकंड में जीरो आ गया, बट दिस नंबर इज एलिमिनेटेड, सो 9 ऑप्शंस अगेन, 9 into 9। एंड थर्ड के लिए यू हैव 1 2 3 4 एज द ऑप्शन ओवर हियर। फिर यहां जो आया वो यहां नहीं आएगा, और इन दोनों जगह पे जो आया वो यहां नहीं आएगा। सो 9 हियर, 8 हियर। फाइनल आंसर वुड बी 288 प्लस 81 प्लस 9। सो दिस इज 90, 288, 378 should be the answer. 378 should be the answer. सौरभ, ऋतिक, क्लियर है? क्लियर है गाइस? वेरी गुड, वेरी गुड। लेट्स जंप टू नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन। काफी टाइम हो गया। दोज हु आर नॉट पार्ट ऑफ माई ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, बी अ पार्ट ऑफ इट। स्कैन करो, ज्वाइन करो। ओके, आ जाओ। A train traveled a certain distance. A train traveled a certain distance at uniform speed. Had the speed been 6 km per hour more, it would have taken 4 hours less. Had the speed been 6 km per hour less, it would have taken 6 hours more. The distance traveled by the train. Time, speed and distance का very basic question this is. Let's say the standard speed is s and the scheduled time is t. So the distance is s into t. St is the distance. Let's say standard distance is s, standard speed is s, and time taken standard is t. So distance is s into t. अब क्या हो रहा है, अगर स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर से बढ़ जाएगी, 6 किलोमीटर से बढ़ गई, तो टाइम टेकन वुड बी 4 आवर्स लेस. So s plus 6 into t minus 4 should be equal to the distance again. Okay, and again you have one more statement, speed being 6 kilometer per hour less, s minus 6, so it would have taken 6 more hours, t plus 6. बोलो यस सर. सो मेरे पास दो वेरिएबल है, 3 इक्वेशन है, बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा. वी आर लुकिंग फॉर एस एंड टी एंड द फाइनल आंसर इज एस इंटू टी. फाइनल आंसर इज एस इंटू टी. दिस इज व्हाट इज आस्क्ड, द डिस्टेंस कवर्ड. दिस इज व्हाट इज आस्क्ड. बड़े आराम से यू कैन डू दिस.
पहले इन दोनों को इक्वल करो। सो एस टी इक्वल्स एस टी माइनस 4s प्लस 60 माइनस 6t minus 24. This gives me ST से ST is cancelled out. So this gives me क्या this gives me sir 4s minus 60 equals minus 24 or I can write 2s minus 3t equals minus 12. Okay, this is the first equation. This is the first equation. इन दोनों को भी इक्वेट कर दो. You will get one more equation. Let's do that. First and third ko. So you will have ST equals ST plus 6s ST plus 6s minus 60 minus 36. Okay, ST से ST cancel out हो गया. I can write 6s minus 6t equal 36 or s minus t equals 6. दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, वेरी वेल इट कैन बी सॉल्व, बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा, राइट। s माइनस टी इक्वल 6। अच्छा, इसको काम करते हैं, लेट्स मल्टीप्लाई, लेट्स एलिमिनेट t, इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3s माइनस 3t इक्वल्स 18। इसके साथ सॉल्व करते हैं, 2s माइनस 3t इक्वल्स माइनस 12। सब्सट्रैक्ट किया तो माइनस प्लस प्लस, दिस गेट्स कैंसल्ड आउट, s इज इक्वल टू 30। यू हैव s इज इक्वल टू 30, और अगर s 30 है, s 30 मिल गया तो पुट योर s इन हियर, s 30 यहां पुट कर दो, you will get TS 24. You will get TS 24. And now product of S and T. S and T was asked. S into T is 30 into 24, 720. 30 into 24, 720 was the answer. $720, very good. क्लियर है? बोलो हाँ जी, हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजेश एंड विमल ओन 20 hectares and 30 hectares of agricultural land which is entirely covered by wheat and mustard crops. The cultivation area of wheat and mustard owned by Vimal is in the ratio 5:3. अच्छा देखो, दिस इज राजेश, दिस इज राजेश, ओके, एंड दिस इज विमल, दिस इज विमल, राजेश एंड विमल, वी हैव राजेश एंड विमल, ठीक है। राजेश, द लैंड ओन्ड विथ राजेश इज 20 hectares. The land owned with Vimal is 30 hectares and they are growing only wheat and mustard, nothing else. They are growing only wheat and mustard, nothing else. The cultivation area of wheat and mustard in the land owned by Vimal is 5:3. So Vimal is growing wheat and mustard in the ratio 5:3. So how much is wheat? How much is wheat? Sir, 5 upon 5 plus 3 into 30. बोलो yes sir. So 5 by 8 into 30. 150 by 8, 75 by 4, 18.75. Wheat is 18.75. So remaining 11.25 is mustard. Remaining 11.25 is mustard. Yes, sir. Very good. Chalo. The total, if the total cultivation area of wheat and mustard are in the ratio 11:9, total is 30 and 20, 50.
टोटल इज 50, इसमें wheat is to mustard is in the ratio 11:9, तो wheat कितना होगा बेटा? सर wheat would be 11/11 plus 9 into 50, right? 11/20 into 50, this goes 55/2, 27.5. So total wheat is 27.5. गाइस स्टक हो रहा है क्या? सौरभ, ऋतिक, कंफर्म करो सिया को. आई डोंट थिंक स्टक हो रहा है, बट डू लेट हर नो. टोटल वेट इज 27.5. ओके, तो 27.5 में 18.75 तो विमल के पास है. रिमेनिंग इज विथ राजेश 1.25 एंड 7.5, 8.75. Total weight is 27.5, so this plus this should be 27.5. This already is 18.75. No, it is not buffering Sia. So 8.75 wheat होगा राज के पास. No, what amount of mustard is there with Raj? So 20 minus 8.75. So this is 11.25. That is the amount of mustard with Raj. Now what is the question? The ratio of cultivation area of wheat and mustard in the land owned by Rajesh. इसका रेशियो बताना था. 8.75 और 875 upon 1125. 125 से this goes in 7/9 times. The answer is 7:9. Option B. The answer is 7:9. ऑप्शन बी. क्लियर है गाइस? इज इट क्लियर? नहीं सिया, स्टक नहीं हो रहा है बेटा, एक बार रिफ्रेश करो. आई बिलीव आपको वैल्यूज निकालने पड़ेंगे. क्या नाम है, मिस्टर पी के. बेटा इसको ना वैल्यूज निकालना ही पड़ेंगे. मतलब खुद ये छोटा है, बहुत बहुत बड़ा नहीं है, खुद छोटा है काफी बेटा ये. सो वैल्यूज निकालने पड़ेंगे. स्टक नहीं हो रहा, बट आपका सेम चैट बार बार आ रहा. नहीं सिया सिया एक बार रिफ्रेश कर ले बेटा. चलो. So what do I have here? 3 raised to the power a is equal to 4 raised to the power b is equal to 5 raised to the power c is equal to very long question. The value of the product a b c d e f is what? ये पूछा है. Okay. So आप इसको log से भी कर सकते हैं बड़े आसानी से. The question is very simple. आप log ले लो, multiply कर दो, you'll get the answer. Or what you can do here is, देखो 8 raised to the power f is 9, ये गिवन है. ओके, एंड 8 इज इक्वल टू 7 raised to the power e. तो 8 की जगह लिख दो 7 raised to the power e to the power f is equal to 9. सो ये क्या हो जाएगा? 7 raised to the power e f is equal to 9, राइट? अब 7 is equal to 6 raised to the power d. तो 7 की जगह 6 raised to the power d लिख दोगे बेटा, तो व्हाट यू विल गेट, देखो यहां पर है 7 raised to the power ef equals 9. This will become 6 raised to the power def equals 9. And now 6 को तुम 5 raised to the power c से रिप्लेस कर दो, so it will become 5 raised to the power c def equals 9. Now 5 को रिप्लेस कर दो तुम 4 raised to the power b से, 4 raised to the power b से ना. हाँ, यू कैन आस्क, जो भी पूछना है छोटू पूछो बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है. 4 is to the power b c d e f, this is equal to 9. एंड अगेन 4 को रिप्लेस कर दो 3 raised to the power a से, so 3 raised to the power a b c d e f is equal to 9. This is what you have. This is what you have. Okay. सो ये एक पूरा का पूरा चक्कर चल गया, राइट?
यहां से शुरू हुआ और ये पूरा का पूरा एक चक्कर चल गया, ये पूरा का पूरा एक चक्कर चल गया। एंड नाउ दिस कैन बी रिटन एज, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको लिख सकते हैं 3 स्क्वायर। सो ABCDEF इज इक्वल टू 2, ABCDEF इज इक्वल टू 2, खत्म। और इसी क्वेश्चन को आप लॉग से भी कर सकते थे, लॉग इज ऑल्सो वेरी इजी, ये भी बहुत आसान है, ठीक है। ट्राई सॉल्विंग द सेम क्वेश्चन बाय लॉग, लॉग ले लो, सबका लॉग ले लो एंड लॉग को मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट इट वेरी इजीली। आई हैव टेकन दिस मेथड हियर बिकॉज मैं रेगुलर क्लासेस में मैंने लॉग से कराया हुआ है, इसलिए आज आई चेंज्ड दिस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, फॉर एनी नॉन जीरो रियल नंबर x, let fx be fx plus 2f of 1 by x equals 3x, then the sum of all possible values of x for which fx is equal to 3. Okay, अभी के लिए इसको भूल जाओ, forget about this, forget about this, forget about this. What do I have? I have fx plus 2 times f of 1 by x equals 3x. और ऐसे क्वेश्चंस मैंने कराए आपको क्लास में, यूट्यूब पे भी कराया है, पेड में भी कराया है। इनफैक्ट ऑल द क्वेश्चंस दैट हैव फीचर्ड इन कैट 2024 सब हम लोगों ने अपने क्लास में करते हैं। क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में? रिप्लेस x विथ 1 by x, है ना, रिप्लेस x विथ 1 by x, तो आपको क्या मिल जाएगा? This will become f of 1 by x plus 2 times f of x equals 3 by x, हाँ या ना, ये मिल गया, डेटा खत्म हो गया था, चलो कोई नहीं। And this is our first equation, this is our first equation, this is our second equation, okay. And I am interested in fx, क्योंकि मुझे fx की वैल्यू गिवन है, I am interested in fx, तो क्या करेंगे सर, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 माइनस 2 इंटू 2 करेंगे, ओके, 1 माइनस 2 इंटू 2, सो इसको पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 से मल्टीप्लाई करने पे यू विल गेट 2 टाइम्स f ऑफ 1 बाई एक्स प्लस 4 टाइम्स f ऑफ x is equal to 6 upon x when this is multiplied by 2, okay. And now let this be equation 3, let this be equation 3. आप ऐसा करो, 3 में से 1 को माइनस कर दो, 3 में से 1 को माइनस कर दो 3 में से 1 को माइनस कर दो, तो what you will get? 2f of 1 by x, this will get cancelled out, माइनस कर रहे हैं हम, राइट, सो this minus this gets cancelled out, 4fx minus fx, you will have 3fx, this is equal to 6 upon x minus 3x, 6 upon x minus 3x, right. So 3 से भी कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट, दिस गोज इन 2 टाइम्स, दिस इज कैंसिल्ड आउट, सो f of x equals 2 by x minus x, sorted. And now this is the first part of the solution. Second part के लिए fx is equal to 3 is given, fx is equal to 3 is given, I can use that particular value over here, यहाँ पर use कर सकते हैं, so what I'll have 3 equals 2 minus x square upon x, okay, so what I'll get? X square minus 3x plus 2, sorry, 3x, x square plus 3x minus 2 equals 0, हाँ या ना, this is what I have now, this is what I have, ये फाइनल इक्वेशन है मेरे पास, this is a quadratic equation, this is a quadratic equation, and what is asked? Read the question. Sum of all possible values of x,
Here, all possible values of x are roots of x. This is a quadratic equation. All possible values of x are roots of this equation. And what is sum of roots of the quadratic equation? What is sum of roots of a quadratic equation? Sir, minus b by a. So sum of all possible roots here is minus b by a, which is minus 3 by 1. So correct answer is option B. Correct answer is option B. ऑप्शन रख के चेक कर सकते हैं ना सर। यहां के बाद आपको सम निकालना है बेटा, सम। सिया सम निकालना था। ओके, चलो आगे बढ़ जाए। रूट ने निकालना था, सम निकालना था। गॉट इट? Let's jump to next question. The average of three distinct real numbers is 28. कोई नहीं, देख लेना मतलब रिकॉर्डिंग में and get it done. Okay? So देखो A, B and C. A, B, C. इनका एवरेज है 28. सो आई कैन से देयर सम इज 84. Sum is 84. If the smallest number is increased by 7, the smallest number is increased by 7. अगर smallest number को 7 से increase किया, A plus 7, I have assumed that A is greater than C is greater than B is greater than A. ये मेरा assumption है, ठीक है? ये मेरा assumption है। C is the greatest, C is greater than B and both of them are greater than A. 84 किधर से आया? Average given है बेटा, average of 3 numbers is 28. That is total of 3 numbers. अगर दो नंबर का एवरेज 10 है तो दो नंबर्स का सम इज 20 ना। अगर दो नंबर्स का एवरेज 10 है तो दो नंबर्स का सम इज 20. सम वी आर इंटरेस्टेड इन 28 into 3. Very good. So if the smallest number is increased by 7 and the largest number is reduced by 10, इसको C minus 10 कर दिया. The order of the numbers remains unchanged. मतलब B अभी भी बीच में आएगा. I mean C minus 10 is greater than B and B is greater than A plus 7. And the new arithmetic mean becomes 2 more than the middle number. अच्छा ध्यान दे बेटा. What would be the new arithmetic? What would be the new sum? देखो 84 was the sum. एक नंबर 7 से बढ़ा, दूसरा 10 से कम हो गया. So overall difference is -3. The new sum is 81. हाँ या ना? The new sum is 81. Because आपने 7 बढ़ाया एक नंबर बट दूसरा नंबर 10 से कम कर दिया. So overall 3 का रिडक्शन हो गया. So new sum is 81. Right? अगर new sum 81 है तो new average is 27. Here the average was 28. Here the new average is 27. And question में given है arithmetic mean becomes 2 more than the middle number. So we can find out B. This arithmetic mean is 2 more than the middle number. So B has to be 25. B has to be 25. So this B will be 25. This B will be 25. We have calculated the value of B. B मिल गया आपको. Very, very good. And now the difference between the largest and the smallest number becomes 64. So difference between these two, this and this, it becomes 64. So C minus 10 minus A plus 7, this becomes 64. So we have an equation in form of C and A. C minus 10 minus A minus 7 equals 64. So C minus A
इक्वल्स 81। बोलो यस सर। एंड फर्स्ट इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे तो आई कैन से a प्लस 25 प्लस c इज 84, तो a प्लस c इज 59 है या ना। a प्लस c वुड बी 59। आई कैन राइट c प्लस a एज 59, राइट। आपको क्या निकालना था, लार्जेस्ट ऑफ द ओरिजिनल नंबर्स, आपको c की वैल्यू निकालनी है, राइट। जस्ट ऐड दीज टू इक्वेशंस, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे, यू विल गेट 2c एज 140 और c एज 70। वॉज द आंसर टू द क्वेश्चन। द लार्जेस्ट ऑफ द नंबर्स वॉज 70. The largest of the numbers was 70. Very good. Sorted? Very well. Do like the session, guys. Next question. There is a regular octagon A, B, C, D, E, F, G, H has sides of length 6 centimeter each. Okay, let's try to draw an octagon. एक octagon try करते हैं draw करने का, ठीक है। This, 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 this. Let's say assume that this is an octagon, ठीक है। I've tried my best. Let's name it A, B, C, D, E, F, G, H, and length of side is 6. ACEG, ACEG, beta. ACEG, A, C, E, this would be a square, है या ना। सेम क्वेश्चन मॉक्स में है सर, बस माइनर डिफरेंट है। सर एग्जाम में मुझसे ऑक्टागन नहीं बन पाएगा। एग्जैक्ट बनाने की जरूरत भी नहीं है, बस कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होना चाहिए सौरभ। नेवर माइंड। चलो, तो देखो, सिंस दिस इज अ रेगुलर ऑक्टागन, तो द डायग्राम इज सिमेट्रिक, ऑल्दो सिमेट्रिक दिख नहीं रहा है, बट द डायग्राम इज सिमेट्रिक एंड दिस इज अ स्क्वायर, राइट। ये एक स्क्वायर है। लेट्स से द साइड ऑफ द स्क्वायर इज ए, साइड ऑफ दिस स्क्वायर इज ए। ए आपसे पूछा क्या है बेटा, एरिया ऑफ द स्क्वायर, एरिया ऑफ द स्क्वायर। सो एरिया ऑफ द स्क्वायर इज, एरिया ऑफ द स्क्वायर इज ए स्क्वायर। मतलब आपको कहीं ना कहीं ए निकाल के उसका स्क्वायर कर देना है, राइट। ए निकाल के उसका स्क्वायर कर देना है, सॉर्टेड। एंड इट्स वेरी इजी टू फिगर आउट। कोई भी एक ट्राइंगल ले लो, ये जो ट्राइंगल बना है ना, ये जो ट्राइंगल बना है, इसको कंसिडर करते हैं। दिस ट्राइंगल लुक्स लाइक दिस। आई हैव टेकन दिस ट्राइंगल, ओके। सो दिस ट्राइंगल इज ए, बी, सी, दिस इज ए, दिस इज 6 and this is 6, and what is the angle here? What is this angle? Angle of a regular octagon is क्या आएगा, क्या आएगा बेटा? सर एक्सटर्नल एंगल इज 360 by n, 360 by n, so which is 45. तो इंटरनल एंगल इज, दिस इज 135, एंगल B is 135, this is 135. बोलो यस सर, दिस इज 135. अब देखो, इफ यू हैव टू साइड्स एंड एंगल बिटवीन देम, आप कोसाइन रूल लगा सकते हो। आई कैन राइट cos of 135, cos of 135
इज इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 6 इंटू 6, हाँ या ना? व्हाट इज द कोसाइन रूल? Cosine rule is this is the side is A, B, C, the angle A, B, C, the vertex A, B, C, and अगर आपको ये निकालना है cos A is equal to B square plus C square minus A square upon 2BC, right? Right? B square plus C square minus A square upon 2BC. cos A निकालना है तो एंगल A के ऑपोजिट वाला सेगमेंट इज अज्यूम टू बी स्मॉल a, एंगल B का ऑपोजिट सेगमेंट इज अज्यूम टू बी स्मॉल b, एंगल C का ऑपोजिट सेगमेंट इज अज्यूम टू बी स्मॉल c, एंड दिस इज द cos रूल. यस और नो? आई कैन अप्लाई दिस, और मुझे a स्क्वायर ही निकालना था, a स्क्वायर आपको डायरेक्ट मिल जाएगा. सॉल्व दिस. व्हाट इज cos 135? cos 90 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा माइनस साइन 45, 0 1 by 2 माइनस 1 by रूट 2. चलो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस 1 by रूट 2 इक्वल्स 72 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 72. सो ए स्क्वायर क्या आ जाएगा बेटा? इसको सॉल्व किया थोड़ा सा सॉल्व किया, अगर इसको थोड़ा सा सॉल्व किया अगर, तो आपको मिल जाएगा ए स्क्वायर इक्वल्स 72 प्लस 72 अपॉन रूट 2, हाँ या ना? वेरी गुड. चलो, और दिस इज 72 प्लस 36 रूट 2. आप 36 कॉमन लेते हो, so 2 plus root 2 is a square. This is what you will get, 36, 2 plus root 2. Okay. So yes, yeah, but ये भी वन लाइन का है ना, आपको बस ये यूज करना था, that's it. बहुत बेसिक है. The question was very easy in nature. A square comes out to be 36 plus 2 root 2, and that was only asked. So quickly, it could be option C as the answer. नहीं, B नहीं है मिस्टर पीके, B नहीं है बेटा, because 72 plus 72 upon root 2 आप कैंसिल आउट करोगे तो दैट वुड बी 36 रूट 2. आपने करा है ज्योमेट्री, आपको ज्योमेट्री करना पड़ेगा इसके लिए थोड़ा सा. स्क्रैच बैच में मैंने ज्योमेट्री कवर करा, एक बार वो देख लो. इसमें द कंसेप्ट्स दैट यू नीड इज एंगल ऑफ ऑक्टागन एंड देन कोसाइन रूल. ये दोनों आपको पता होना चाहिए. चलो एक बार वापस ट्राई करना. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. The sum of all distinct real values of x that satisfy the equation this. Okay. So what do I have? 10 raised to the power x plus 4 upon 10 raised to the power x equals 17 upon 2. ये given है. Let's put 10 raised to the power x as y. Let's put 10 raised to the power x as y. So what do I have? Y plus 4 upon y equals 17 by 2. This is y square plus 4 upon y equals 17 by 2. Cross multiply करने के बाद you will have 2y square okay plus 8, अच्छा माइनस 17y प्लस 8 इक्वल्स 0. ऐसा कुछ मिलेगा. हाँ जी. ओके चलो लेट्स सॉल्व इट. सो 2y स्क्वायर माइनस 16y माइनस y प्लस 8 इक्वल्स 0.
2y taken common, y minus 8 minus 1, y minus 8 equals 0. This gives me y as half and 8. y की दो वैल्यू मिल गई आपको, and that is half and 8. Okay. हाँ, n minus 2, that is the formula to find angle, right? So सेम ही तो करा है सिया, सेम ही तो करा है बेटा. तुमने इंटरनल एंगल का फॉर्मूला लगाया, मैंने एक्सटर्नल का लगाया, फिर इंटरनल निकाला. आई मीन सेम तो है. चलो, सो y की दो वैल्यूज आ रही है, हाफ एंड 8. ओके, y की दो वैल्यूज आ रही है, हाफ एंड 8. So 10 raised to the power x, y was 10 raised to the power x. I need this space. I'm taking this out. So दो केसेस बनेंगी. First case is 10 raised to the power x is 10 raised to the power x is half. And second case क्या बनेगा? 10 raised to the power x is 8. दोनों को इंडिविजुअली सॉल्व करना पड़ेगा. लॉग ले लो, इधर लॉग ले लो. सो लॉग लिया बोथ साइड्स, सो यू विल हैव x log 10 equals log half, right? So x is equal to log half upon log 10, or this can be written as x is equal to log half to the base 10, right? लिख सकते हैं ना बेसिक लॉग प्रॉपर्टीज. बेसिक लॉग प्रॉपर्टीज, दिस इज फर्स्ट वैल्यू ऑफ x, राइट साइड लॉग ले लो. सो x log 10 is equal to log 8, right? x would be equal to log 8 to the base 10. Sorted. A होगा इसका. वेरी गुड. So x has two potential values. X has two potential values, this and this. आपसे पूछा गया था sum of all distinct values of x. इन दोनों का सम पूछा है. Okay. Now I'll take this out. I'll take this out. So sum पूछा है, right? So answer is 10 half to the log base 10 plus log 8 to the base 10. This is your answer. This is your answer. Now log a plus log b is how much? Log ab, log 10 half into 8, right? So this is log 10, 4. 4 can be written as 2 is square to the base 10. This 2 can be taken in front. So 2 log 2 to the base 10 is your answer. 2 log 2 to the base 10 is your answer. 2 log 2 to the base 10 is your answer. Very good. And here we come to the end of CAT 2024 slot 3. Okay. Sorted, guys. So this is it. What we have done till now, 2024 is entirely taken care of. Slot 1, slot 2, slot 3. Everything is taken care of. Now we will jump to 2023 slot 1. Very good, Mr. PK. I would urge कि moving forward एक दो महीने बाद ना, you try all of these questions once again in one go. फुल 2 hours लग गए सर. हाँ, एक्सप्लेन करने में 2 घंटे जाते हैं ना. एक्सप्लेन करने में सब कुछ लिखना होता है, वापस करना होता है. चलो, 2 घंटे एक्सपेक्टेड है. आई मीन यू गाइस आर गुड, इसलिए 2 घंटे लग रहे हैं. अगर तो ज्यादा लग जाते. वी हैव गुड क्राउड, तो 2 घंटे लग रहे हैं. चलो, इंडिपेंडेंस डे के लिए एडवांस में विशेष. हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एवरीबॉडी.
झंडा जरूर फहराना, बाय डेफिनेटली समथिंग फ्रॉम रोड साइड, कुछ तो खरीदना, वो तिरंगा विरंगा जो बेचते हैं कुछ तो खरीदना, ठीक है, नॉट फ्रॉम शॉप, वो जो चौराहे पे बेचते हैं ना बच्चे, उनसे खरीद, बच्चे नहीं, सपोर्ट नहीं करना होता है, बट रियलिटी इज व्हाट इट इज. No, works better, Saurav. No issues with that. Happy Independence Day, गोलू. What's your name, PK? पूरा नाम क्या है छोटू, बताना एक बार. झंडा भी फहराना पक्के से, एंड कुछ एक छोटी सी चीज खरीदना बेस्ड ऑन योर बजट. 5 रुपए से भी चीजें मिल जाती है, छोटी सी भी चीज खरीदना, बट कुछ खरीद के एक दिन के लिए एटलीस्ट. चलो, टिल देन हैव अ ग्रेट डे गाइस. दिस इज आशीष कुमार साइनिंग ऑफ अगेन. विल मीट अगेन. कभी अलविदा ना कहना. बी अ पार्ट ऑफ माई ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल. हाँ, झंडा मत लगाना गाड़ी पे, राइट. हेलो स्पिक स्टॉक, आए थे तुम, चले गए फिर लास्ट में. प्रदीप कुमार, ओके प्रदीप. What questions you have? Hello guys, you can always reach me out over my official Telegram channel. Do join me daily at 7 p.m. 7 p.m. Keep on checking the channel. I come live at 7 p.m. on daily basis on the channel. Sir, my English communication is weak. I'm not the right person for this. Ask this question to Ritu ma'am. She would help you with this. I mean, the basics, how you can improve. Speak stock. But speak stock, listen, Chotu, you have been to my session couple of times. I have seen your name. You are not regular. Why, beta? Come to the class now. If you are targeting CAT 2025, these classes are on any day gonna help. Okay, these classes are always gonna help, even if you are enrolled somewhere, offline, online. But you know that these classes are better. I mean, ये free वाले classes की बात करो. I'm not saying कि you take Testbook subscription. But you know from the bottom of your heart, why I'm saying this to you? Because the student who finds these classes helpful, keep coming back. Okay, आप आते हो, I've seen you couple of times. So you find these classes useful. थोड़ा regular हो जाओ. This will help you benefitly. Compounding effect होगा benefit का. चलो, जाते जाते do like the session. Till then, have a great day ahead. This is Ashish Kumar. मिलते हैं बेटा again tomorrow on Independence Day. We'll meet on Independence Day. चलो बाबा, have a great day ahead.